I assume that 2018 covers all the points that you're making before us. मैं आपको हमारे सामने ला के रखते हैं, मैं ले आऊंगा सर। आप जरा, ये मेरी कैलकुलेशन है, इतना आप 2024 की, मैं वैसे 2024 की तरह देख लेंगे। बहुत, अगर काश मेरा चीफ जस्टिस साहब जैसा दिमाग होता कि मैं पढ़ते ही समझ जाता सारी चीज, तो बहुत आसान हो जाता। लेकिन मैं जरा आम आदमी हूँ, मुझे जरा समझना पड़ता है। ये सारी किताबें पढ़ी, हम यही करते रहे पिछले 76 साल से, इंटरप्रेटिंग करते रहे। बट आप अगर सुनेंगे तो इतना आसान होता तो पेज 16 पे आपको देखिए जो जजमेंट, कभी कभी जजमेंट मुझे भी, मैं कहता हूँ जजमेंट ऐसा लिखा जाए जो एक मैट्रिक का तालिब इल्म समझ जाए, ठीक है। उसमें हो सकता है कोई टेक्निकल बात हो, शायद ना समझ आए, मगर ये जजमेंट्स लिखे जाते हैं, आइन बनाए जाते हैं इन लोगों के लिए, वकीलों के लिए नहीं बनाए जाते, ना जजेस के लिए। ये लोगों के हैं, ये उनकी प्रॉपर्टी है। अब उसमें इतनी मुश्किल है समझने के लिए। फिर मैं अब इसको जरा सिंपल करता हूँ। पेज 16 सिंपल है, आप इसको कॉम्प्लिकेट करें। नहीं सिंपल करता हूँ सर, वो सवाल जरा कॉम्प्लिकेटेड है तो उसका जवाब आप कमजोर जजों को भी साथ साथ लेके चले ना। पेज 16 से, पेज 16 अगर चीफ जस्टिस और सीनियर पीने ये तासुर दे, पेज 16 से, पेज 16 अगर चीफ जस्टिस और सीनियर पीने ये तासुर दे रहे तो पता नहीं हमारा क्या होगा। मैं ये जो 2024 की जो बलूचिस्तान से नेशनल असेंबली की सीट्स आई हैं, this actually responds to the question, addresses the question, not to the extent of independent, but to the extent of voters' representation, which you've raised. Now, let's look at page 16. मगर मुझे इससे पहले बता तो दें, अब मैं कहूँ सारों को जोड़ो, तकसीम करो, ये करो, वो करो, रीजन क्या आप कर रही है? Simple, sir. The रिजर्व सीट्स मस्ट नेसेसरीली ऑल बी, स्टूडेंट को समझाते जिस तरह उन्होंने कहा, वो ये है कि अगर क्लास 6 मेरे लिए नहीं और लाइटर नोट, मतलब आसान जबान में मेरी प्रॉब्लम ये है, और शायद हम क्लियर हो जाएं कि अगर इसकी कैलकुलेशन गलत हो जाए तो एक पार्टी जिसके पास 10 वोट होने चाहिए 15 चले जाएंगे, उससे बहुत फर्क पड़ सकता है। सो हम ये कह रहे हैं जिसका जो हक है उसको वो मिलना चाहिए। हम हक को फर्क समझ रहे हैं, आप अभी समझा रहे हैं। मैं सिंपल आपको ये कह रहा हूँ कि आप जो हक की जो बेसिस है ना, वो बेसिस जो है वो उसको नहीं वर्क करता है। वही आपको समझाना है, वो समझना पहले जरूरी है कि ये लफ्ज़ मुझे बता दें हक क्या मतलब है। हमें आइन देखना है जी वही, और वो जब आपने जब हक कर दिया इसका मतलब आपने आधा फैसला कर लिया। अगर आप अपने सबमिशंस दे दें, लीव द कैलकुलेशन फॉर, बस मैं सिंपल आपको ये कह रहा हूं, सबमिशंस दे दें, कैलकुलेशन इलेक्शन कमीशन ने अगर हमें कोई प्रॉब्लम है उन्हें कह तो बात किसी ने रेज भी नहीं, मैं सिर्फ आपको सिंपल ये बता रहा हूं कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ जनरल सीट्स is to be worked out to ensure that all 60 seats are filled in, and the only method to do it is to exclude the independents, but for what is provided in the proviso. So let me ask you, who have joined a political party, they add to the tally of political parties, rest of them have to be excluded, otherwise the seats will not be filled. so when in a situation like the present one, when there are more independents and there is confusion over the status of those independents, those seats will all be excluded, because at the end of the day it's the election commission that said that these people are independents, and it's the election commission that declared that they cannot join a political party and that SIC is not a political party. So as per your formula, once the election commission has declared all of this, all these seats now are to be excluded, and only the seats of which members are those independents that have joined a political party that you are including. I mean, वो calculations तो है नहीं हमारे सामने. And it appears that then the formula is left in the hands of the election commission to do as they choose. जिसको independent बना दे, किसी को political party बना दे, because that's what we've been hearing over the last few days. उसका जवाब भी आ जाएगा आपको. एक चीज मैं complete करके then I'll respond to this question. क्या independents ने सिलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज किया या उन्होंने खुद एप्लीकेशन दी कि वो इंडिपेंडेंट? नो सर, द इंडिपेंडेंट, उनका केस तो ये है that we had joined a political party under the proviso, and that political party should be treated, and by virtue of joining that political party, इंडिपेंडेंट में से कोई आया हमारे सामने? नहीं आया सर, and दो consequences वो आपसे मांग रहे हैं. जो दो बात हुई है, the case as made out and set out before you. One is आप इसमें आए, ये जो आप हमें पेज 16 पे पैरा 22 दिखा रहे हैं. Now, if I understand, I read your para, and of the 4 seats are reserved for women in Balochistan province. If I understand your para correctly, 2 go to PMNN
and 2 go to JUIP. Is that right? No, sir. No. 2 go to PMLN, 1 goes to JUI, and 1 goes to People's Party. And the reason for that is that मैं जो अभी आपके सामने जो case set out हुआ है वो ये है कि these independents, they claim to have joined a political party, and they have requested or asked your lordships to overturn Peshawar High Court's judgment, because by joining this political party, their status as an independent ceases to exist, and consequently, Sunni Ittehad Council claims that by virtue of these independents joining Sunni Ittehad Council now becomes entitled to reserve seats, and the logical consequence of that is that because they, according to them, because they are no more independents, therefore for the purposes of working out percentage share of each political party, Rule 95(2)'s proviso will kick in as opposed to the rule itself, which is the independents should not be excluded for the purposes of working out that formula on the basis of which proportional representation is to be worked out. If you take the example of, and on the basis of a hypothetical, that if their case is accepted as it is, there are still 8 members who have retained independent status. Now, going by what Justice Shah has observed, that why exclude independents? Where is this coming from? You look at, and I'm now just making a province-neutral sort of example. We'll have to go into the exact numbers, which is to say that how many of these 8 belong to which province, and it will have a consequence over the seats which are allocated to each province. But let's assume that the total is 266, the general seats, and 8 members have retained independent status. Sorry, I want to raise this question because I'm not getting, I think calculation is so critical for this. And I again go back to one hypothetical example which disturbs me, which is very simple. One political party has made it with 5 votes from each province and federal capital area. So they have 1 vote each from all these 5 places. And that's one political party. नहीं 5 हो गए ना जी, पंजाब की तो है 4 सूबे और 1 सेंटर, ठीक हो गया। एक पॉलिटिकल पार्टी आई, बाकी सब इंडिपेंडेंट्स हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके 5 सीटें हैं उसके पास। सो आप उसको आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक 70 इसको मिल जाएंगे, यही है ना। सो दैट डिस्टर्ब्स मी कि 5 उसके पास वोट हैं सारे ही असेंबली में, और आप उसके पास 75 हो जाएंगे। वैसे अगर आप परसेंटम कैलकुलेट करें तो उसको 4-5 और मिलेंगे तो 10 हो जाएंगे। No. ये बात समझ। No. When you look at Rule 94, you are disregarding Rule 95 too. No, मैं 290 में जाए, मैं तो 51 से ड्रॉ कर रहा हूँ। No, I'm just saying, how does this appear to you that this political party will get 70 votes who has secured 4 votes in the assembly? This tells me is that the people of the country have rejected political parties. They now have returned independent candidates, and they what they want now is that these reserve seats, which are actually to be filled in through political parties, do something about it. मुझे बात बताएं through constitutional amendment should we want to bring it. एक बात बताएं कि अभी जो क्योंकि पैराग्राफ में लिखा हुआ है, जिस आपने एग्जांपल्स में दिया है कि reserve seats for allocated to a province, then the general seats allocated to that province, which political party wins how many seats out of that, and then you have the independents. So if any independents join a political party in terms of the proviso, then you have to see which of those independents were from province A, which were from province B. Necessarily, yes. So therefore, just to have clarity for myself, suppose Islamabad Capital Territory, which has 3 seats, returns 3 independents, right? And let's suppose those 3 independents join within the 3-day period, join political party X. Then for purposes of calculation, notwithstanding that ostensibly in terms of the proviso, they have joined political party X, the ratios for the reserved seats, actually these 3 candidates will not come. Yeah.
Yes. And I just want वो जो आपने क्वेश्चन किया था, want clarity on जी जी वो ऐसी बिल्कुल ऐसी बिल्कुल ऐसी if I now move on, no sir अभी तो मेरे ख्याल में अगर आप I need to 96 अगर पढ़ लें आर्टिकल, उसमें जरा क्लियर हो जाएगा. आर्टिकल 59 इज अबाउट सेनेट इलेक्शन जी, उसमें मेंबर्स ऑफ द असेंबली का जिक्र है जी. उसमें ये नहीं लिखा है members of the political party secured general seats. आप जरा पढ़ ले, दोनों का आपको डिफरेंस नजर आएगा. जी. Which clause my lord is referring to? 59. Which clause? Attorney General sir, may I request, speaking for myself, may I request that since you don't have it with you, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.